सो महादेव की उपासना या उनको जब हम याद करते हैं तब इसलिए नहीं कि उनमें शक्तियां हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें ये कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छे साधक बन जाओगे तो तुम स्वयं शिव हो सकते हो। अच्छा, शिव जी के साथ भूत प्रेत रहते थे, कहते थे विष्णु ब्रह्मा किसी ने उनको शरण नहीं दी, पर शिव जी कहते हैं कि हम तुमको शरण देंगे, आओ, तुमको भी हम साथी रखते हैं। तो मतलब जिसका मन भूत जैसा है शिव जी उसको भी रख लेंगे। शिव ये नहीं कहेंगे कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम तामसिक हो, तो तुम भूत जैसा मन रखते हो, तुम प्रेत जैसा मन रखते हो, तो भी शिव तुम्हें स्वीकार करते। इसलिए शिव को औघड़ दानी कहते हैं कि वो बिना विचार किए तुमको दे देता है। संसार मांगो तो संसार और परमार्थ मांगो तो परमार्थ, क्योंकि जो असली अर्थ में परमार्थी है उसको संसार से कभी विरोध नहीं होता। हम संसार से द्वेष नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये संसार भी तो उसी परमात्मा की रचना है। तो जब परमात्मा हमें प्रिय है तो उसकी ये रचना, ये संसार हमें अप्रिय कैसे हो सकती? It is not possible that you love the artist but you hate his work. If you love the artist, then it is because his art is so lovable, hence you love the art and you also love the artist. So if this world is artwork of God and you say, I love God, then how can you hate this world? This world has to be loved equally and immensely. But with an attitude of detachment, but with an attitude of detachment. Not being attached and not being involved and not being obsessive of it. अच्छा, हमारे पास कल का एक प्रश्न बचा है। रश्मि, may I see who? Okay, Rashmi. In reference to your first day satsang, you said Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, and it is said Aham Brahmasmi, I am Brahma. Then who is dying and who is being born? And where does that goes after death and comes back? And also there is a third question, if this world is illusion, then where is my home and where I have to go? I'll take all the three questions one by one. Pehli baat, when I said again and again you are born and you are dying, then I am talking not about your body. Now let's understand what this I is. I has components of one, body, two, sense and action organs, 5 of each, meaning 10. This I also has mana, mind, buddhi, chitta, the subconscious, and ahankar. So when you say I, then it is constituting all these 3 elements. Got it? Now, when you say I, this I is actually not the real self. I would say it is the reflected self. The self which gets reflected in the mirror of mind is called Jiva, or the individual soul. शरीर, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिला करके एक मैं जिसको तुम कहते हो वो बनती। अब आत्मा अजन्मा है, आत्मा का तो कभी जन्म ही नहीं होता, तो जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो सवाल यह है कि फिर जन्मा कौन?
जिसका जन्म हुआ वह आत्मा नहीं, जिसका जन्म हुआ वह आत्मा का प्रतिबिंब जो मन में हुआ। ऐसे समझो कि अगर आपके सामने एक बड़ा शीशा हम रख दें तो आपकी परछाई शीशे में पड़ेगी, आपका रिफ्लेक्शन उस शीशे में दिखेगा। सो ये जो रिफ्लेक्शन है इसी को हम जीव कहते, और जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को आत्मा कहते हैं। Let me say it again. The self is pure, the self is Satchit Anand, meaning truth and pure Ananda and pure conscious. That is what the real self is. But when this real self gets reflected into the mirror of mind, a second entity is formed, and this entity is called the individual self, or in Sanskrit we would say Jiva. So who takes the birth? The Jiva takes the birth, not the real self. Now what mind is having is lots of greed, desires, lot of ego, lot of darkness, immense ignorance is there in the mind. So you have forgotten who you really are. इस मन में अज्ञान है, अविद्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ऐसे समझो अगर शीशा गंदा होगा तो जब उसमें आप अपनी शक्ल देखेंगे तो शक्ल भी गंदी दिखेगी कि साफ? तो तुम्हारी शक्ल गंदी है कि शीशा गंदा है? बात समझ रहे हो? शीशा गंदा की शक्ल? शीशा गंदा है। अब अगर ये शीशा गंदा रहेगा तो उसमें शक्ल साफ नहीं दिखेगी। इसी तरह जब मन रजोगुणी और तमोगुणी रहता है तो इसमें आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए यह आत्मा को ही जब रिफ्लेक्टेड हुआ तो हमने कहा जीव आत्मा। तो यह जीव आत्मा अपने आप को कमजोर देखता है, शक्तिहीन देखता है, अपने आप को लिमिटेड देखता है, संकुचित देखता है, इस शरीर में बंधा हुआ देखता है। और सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि जीव अपने आप को शरीर मानता है। When you say I, then usually this I is all about your physicality. So you say this is I, this is me, ये मैं हूँ, ये हूँ मैं, this is me. But when you say this is me, this is just a body. Jesus says, from dust thee come, to dust thee go. तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में वापस मिल जाते हो। ये शरीर मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश से बना है। So the 5 basic elements have formed this body. This 5 basic element formed body is not you, but we consider this as me. So this is the biggest ignorance, this is the biggest misconception we have about ourselves. So in reality you are not body, but what you are feeling is this is me. मैं ही शरीर हूँ। तो तुम बोलते हो मुझे भूख लगी है, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ। और फिर तुम शरीर को तो फिर भी जब बीमार हो जाए, जब बूढ़ा हो जाए तो फिर घर वाले भी कहने लग जाते हैं और डॉक्टर भी कहने लग जाते हैं भाई अब तो इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सारे घर वाले ज्ञानी होके कहते जी शरीर तो मरना ही है, और हम शरीर थोड़े ना है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो मर जाओ पिताजी अब मौत से लड़ो मत। हाँ, मुझे कोई मिले जो मैंने उनसे पूछा आपके पिताजी कैसे हैं? कहते वो तो गए। मैं कहाँ गए पिताजी? कह रहे ये तो पता नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस दुनिया से गए, इस दुनिया से गए, चले गए। कहाँ गए? बोले मालूम नहीं। अच्छा,
आपको भी एक दिन यहां से गए हो जाओगे तुम, सही? तुम्हें मालूम है तुम मर के कहां जाओगे? अच्छा चलो अगली बात छोड़ दो, अभी की बता दो, कहां से आए हो? Isn't it strange? You don't know from where you came and you don't know where you will go after the death happens. And you are living with the body, feeling this is me, and you are attached with the body, so much so that you don't even want to ask the question. Nobody in this assembly has asked me this question in all these 3 days, that who am I? A little bit Gita, what you have read, so you have read so many times, we are Atma, so you just repeat that, I am Atma, without realizing what Atma is, what the real self is. You're just repeating like a parrot. तो ये शरीर मैं नहीं हूं और ये शरीर मेरा भी नहीं है। गीता अध्याय 2 और श्लोक 13 श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हर शरीर बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और हर शरीर के छूट जाने के बाद दूसरे देहांतर प्राप्ति, ये शरीर चला जाएगा तो फिर दूसरा शरीर तुमको मिले जाएगा। ऐसा जान करके ज्ञानी धीर पुरुष मोह नहीं करते इस शरीर के साथ। तो कौन चला जाता है? शरीर तो यहीं बना, यहीं मिट जाएगा, पर कौन चला जाता है? इस जाने वाले को ही हम जीव कहते हैं। इस जाने वाले को ही हम जीव कहते हैं। और जीव मतलब मन सहित आत्मा का ही नाम जीव है। मन क्या है? भावनाएं। मन क्या है? इच्छा, विचार। If I would define the mind, then mind has certain functions, like it thinks, it emotes, it has memory, it has perception, it has intelligence, right? And it cognizes. The power of cognition is there. That is what mind is. So when I am attached with the mind, then the thinking and the functioning of the mind is taken to be as if it is being done by me. So you say, I think, whereas it is the mind which is thinking. So mind has a bad thought, and then you cry, oh, I am such a bad person, I have bad thoughts. You never say it is the mind which is having the bad thoughts, not me. पाप पुण्य किससे होता है? मन से। अच्छा बुरा विचार किस में होता है? मन से। चिंता किस में होती है? शरीर में, आत्मा में कि मन में? आप जवाब दो मुझे। शरीर में। हाथ को चिंता होती है ना? हाथ को चिंता नहीं होती। पैर को होती है? नहीं। सिर को होती है? नहीं। चिंता होती है मन में। और अजीब बात देखिए, जब मन में चिंता होती है तो शरीर रोगी हो जाता है। This is what I say, it is the relationship of mind and body is so deep that when mind is in stress, the body is in stress. We just concluded clinical research was done on Yoga Nidra to see what is the impact of Yoga Nidra on hypertension, high blood pressure.
Yoga Nidra is an ancient tantric yogic technique to experience that I am not mind, body and consciousness. I am separate and different from it. But when you practice Yoga Nidra, it calms your body, it reduces your cortisol levels. And this is the result of the clinical trial done by ICMR, the Indian Council of Medical Research. This went on for 3 months in Hyderabad, where 75 subjects were taken. 2 groups were formed, controlled and the experimental one. And their blood work was done, diagnostic tests were done, BP was measured. And when finally, on completion of this test, when they measured, they found, one, the blood pressure which was 143 by 95 has come down to 118 by 72. No medication. So one group was taking medication and doing Yoga Nidra, other group was not taking any medication, but they had high BP and they were experiencing normalizing of the blood pressure. Not only that, cortisol level down, insulin down, glucose down, CRP down, homocysteine down, TSH down. So these parameters were taken. Blood pressure plus all these 6. So this concludes logically and scientifically that if your mind is not in a stress, then your body begins to get healthy and healthy and healthy.